Mr. Haider, we get the stay properly? Yes, the stay has been granted, and it was interesting because the argument there was again whether the violations are regularizable or not, and I was able to impress upon the Honorable Judge that indeed the violations as alleged were not regularizable and that the construction needed to be restrained right away so that third parties wouldn't be sold these irregular plots or irregular townhouses, and the equities of the case would not be changed to their detriment. These kind of buildings are not even completed, and those people ultimately suffer. It is not the builder who's suffering, it is not the KBCA which is suffering, it is the public at large which is suffering. And that is where the laws, they're stringent enough, they're strict enough, they deal with each and every aspect of building construction. What they do not deal with is the implementation in itself. Because we don't want that these plots which are irregular to be sold to third parties, and they become then part of the problem and part of the litigation, and they buy an illegal property. So the Honorable Court has been pleased to in fact pass a restraining order, and all kinds of construction and any kind of sale arrangement that the seller might be contemplating, all such activities have been restrained. Okay, how long time this stay will be continued? The stay is, the way ad interim stays are granted is that they have to be renewed on every date of hearing. This is a stay order, an ad interim order that was passed in an interlocutory application on a stay application, which is an application that is filed independent of the civil trial, but sort of within the same legal proceedings. So the stay has been granted. It will have to be renewed on every date of hearing. But until it is, practically speaking, until it is argued by the other side that the stay order should be vacated on various legal and factual grounds, the stay would continue until such time. And eventually the stay application will be argued, and one way or another, either the stay order that we've gotten today will be confirmed, or subsequently it would be vacated. Okay, what is the meaning of exactly stay? Means they can't say? Stay can mean different things, but in this case, this order acts as a restraint on the defendants, that a restraint that they cannot construct, they cannot conduct any kind of construction activity, and they cannot sell these townhouses that we are alleging are irregular in their construction. 4 दिन के बाद वो तो जब 5 दिन के बाद रिमांड पे मेरे को यहाँ लेकर आए तो एक जानने वाले मिल गए, फिर उन्होंने जो है ना मेरे भाई को बताया कि यार तुम्हारे भाई को तो ऐसे पुलिस वाले, तो उसने पूछ लिया उनसे पुलिस वाले से कि भाई आप कहाँ से आए हो या कौन से थाने के हैं, उन्होंने बता दिया पुलिस वाले ने, तो इस तरीके से मेरे भाई ये मेरे तक पहुँचे. You have read in a paper that many times the court or the magistrate they raid certain places, they recover the persons who were kept by police for many days. In some cases it happens that, but I think that when I was in the field I always asked to I introduced this कि भाई bail ले लो. You see, if police start taking the bail, it will improve the the police community relationship, because there is a fear, and it is a genuine fear and a correct fear, that the police apprehend the person, keep for many days without any justification. If there is some suspicion against a person, police should call him, take the interview, record the statement, and tell him, okay, अब कल सुबह फिर आना. जब चालान आ गया तो पता पड़ा कि साहब इसमें तो 2 FIR हैं. On the very face of it, चालान को और FIR को और जो स्टेटमेंट्स इन्वेस्टिगेशन के दौरान में पुलिस ने रिकॉर्ड किए, उनको देख के आपको अंदाज़ा होता है जी कि ऑब्वियसली ये गलत काम किया गया. मैं जानता भी नहीं, वो बस चौथे दिन मेरे सामने लेकर आए थे, वो जब मुद्दई उससे मिलाया था मेरे को, नवाज़ नाम के आदमी से, उसी वक्त मेरे को उससे नसर से मिलाया कि ये दोनों साथ मुलविस हैं. तो मैंने उस टाइम पे उनको भी बोला, नवाज़ भाई जो हैं जिनका भाई था वो मरने वाला, मैंने बोला सर मैं जानता नहीं हूँ, ये मेरे को बेगुनाह फंसा रहे हैं, सही है ना, मैंने आपके भाई को मैं जानता नहीं हूँ, मैंने देखा नहीं है, ये बोलने मारा है, मेरी उससे क्या दुश्मनी, वो पुलिस वाला था, हम अपना मेरा गारमेंट्स में मैं काम करता हूँ, सही है ना, मैं प्रेस पैकिंग का मेरा ठेका, मैं अपने 24 घंटे वहीं पे होते हैं नई कराची में. बहरहाल उन्होंने मुझे बंद कर दिया. अब सिस्टम चल रहा है, इसमें ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन अलग है. जो इंसिडेंट होता है मेरे एरिया में, और मैं जैसे ही FIR करता हूँ, FIR इधर लॉज हुई, ये चली जाएगी इन्वेस्टिगेशन विंग में. इन्वेस्टिगेशन का एक बिल्कुल सेपरेट इंचार्ज है,
अब अगर उसमें फ़र्ज़ करें कि मैंने किसी को इम्प्लिकेट कर लिया है, किसी को गलत तरीके से गिरफ़्तार करके उसमें शो करना चाह रहा हूँ या कर दिया है, तो मुझे पता है कि किसी और के हाथ में जाएगी तो वो उसमें से ज़रा सा क्रॉस करेगा उस मुलजिम को या वहाँ के मौजूद लोगों को, जहाँ इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे वो जाएगा, ज़रा सी वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा, 4 आदमियों से बात करेगा, उसको पता चलेगा, डेफिनेटली पता चलेगा। तो इतना आसान नहीं है ये, मतलब आजकल के माहौल में तकरीबन नामुमकिन है। अगर पहली एफआईआर सही थी और दूसरी एफआईआर लिखने की नौबत क्यों आई? ज़रूरत नहीं थी। उसी एफआईआर में उसके भाई का बयान लिया जाता और उसी एफआईआर के तहत एएसआई नसर हयात को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। आखिर पुलिस ने दूसरी एफआईआर क्यों लॉन्च की? इस केस में हो गया, लेकिन अगर किसी और इंसिडेंट में अगर आप देखें तो कोई इंसिडेंट हो गया और मैंने एक एफआईआर काट दी, फ़र्ज़ करें कि एक इंसिडेंट हुआ, मर्डर का हुआ या किसी भी चीज़ का एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, उसमें एफआईआर कट गई और उसमें कंटेंट्स फ़र्ज़ करें कि पूरे नहीं आए, तो वो फिर फर्दर उसका स्टेटमेंट लेके उसको आगे फिर इन्वेस्टिगेशन में केस डायरियों में लिख देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इंसिडेंट हो गया है उसके बाद कोई नई उसमें यानी कोई पेशरफ्त हुई है तो दूसरी एफआईआर कटेगी, ऐसा नॉर्मली जनरली नहीं होता। वो किसी स्पेशल रेयर केस में हो सकता है। ये भी हमारे सामने मौजूद था कि कोई भी इस वाक़े का चश्मदीद गवाह नहीं है। Naturally, it will give a complication in the investigation. The first FIR is always based on the natural and immediate response to the crime. There should be only one FIR. But if you feel that the FIR is not being lodged as the complainant demands about the evidence, about the situation he gave, or if the police officer has not mentioned the suspected person as the complainant say, then a further statement should be taken, that should be corroborated. But in some cases, if you feel or the court feel that FIR sahi nahi dakhil hui, they can record the statement of the complainant and then they nullify that FIR, cancel that FIR, and then direct the SHO. This written statement or written complaint should be incorporated to another FIR. So the written complaint is totally incorporated into FIR. एक अच्छा आईओ हो जाती हैं, 2 हैं 3 हैं, वो अपनी तफ्तीश पूरी करके he will merge all the FIR and submit one charge sheet and explaining under what circumstances different FIR were lodged, and he will also explain that after collecting all evidences, because all the evidences are related to that one offence, all the FIRs are related to one offence. It is the quality of the evidence he collects and the ability that how he collects and what evidence which is admissible with the crime, that submitted to the court.